Good morning, student. This is chapter 3 of class 8th science. This chapter is pretty long in a comparison of chapter 1 and chapter 2. So we are now discussing about synthetic fibers and plastic, chapter 3. About the introduction of this chapter, we are usually uses clothes and plastics. These two materials are very important in our life because there is a vast variety of clothes and plastics, but availability of the clothes and plastic are much more in a comparison of other materials. So we will be discuss in this chapter about the plastic and synthetic fibers, synthetic fiber and plastic, and their uses. What are the examples of synthetic fibers? What are the examples of plastics? What are the examples of their substitutions? What will be their uses, misuses, harmful, everything will be discussed in this chapter. So this was the introduction of this chapter. Now we are discussing about synthetic fibers. Simply we know that all the materials whose are used synthetic fiber are very valuable in human beings life. So simply say that fibers made by the human beings are called synthetic fiber. Okay, very long structure. This should be by the continuous repetition of one more small compounds. The small compounds called monomers. What are the monomers and what will be the repetition continuously bonding to each other till they form a very long structure called polymer. What are monomers and polymers? This will be discussed in their actual definitions. Is that clear? Synthetic fiber means human beings made करता है fiber को. You can easily say that man-made fibers are called synthetic fibers. These are the many more qualities we will discuss in next topics. और एक तरीके से इसको पॉलीमर भी आप कह सकते हो. दिस शुड बी डिफाइन एज पॉलीमर. अब पॉलीमर क्या होता है, मोनोमर क्या होता है, और इन दोनों का क्या रिलेशंस हैं, हाउ दे कैन डिफाइन इजीली, वी विल डिस्कस बाय देयर डेफिनेशंस. नो मोनोमर synthetic fiber are, there is a two varieties of synthetic fibers, monomer and polymer. Monomer definition should be the repeating unit of a polymer is called monomer, but there is a mix with monomer and polymer, then we will clear it by a given activity. What will be the definition of polymer? A large compound made up by joining of many smaller compounds are called polymer. ना definition of monomer and polymer क्लियर, और ज़्यादा क्लियर अगर हम करना चाहें तो इसको एक एक्टिविटी करते हैं, उस एक्टिविटी में ये दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. आप क्या करिए कि एक 50 सेफ्टी पिन ले लीजिए और सारे सेफ्टी पिन को एक दूसरे से इंटरकनेक्ट कर दीजिए और उनको एक राउंड लूप बना लीजिए. राउंड लूप मीन्स एक सर्कल बना लीजिए, सारे सेफ्टी पिन एक दूसरे से कनेक्ट रहें. ईच सेफ्टी पिन सेपरेटली आर कॉल्ड मोनोमर एंड द होल ऑफ द सर्कल with joining of the all 50 pins are called polymer. So easily you can say that the total loop of the safety pins in a circle is called a polymer, and one part of the loop or safety pin group, single a pin, is called monomer. Another examples as usual life, जैसे हम शर्ट पहनते हैं, कोई भी क्लोथ मटेरियल है, उस क्लोथ मटेरियल का अगर वन थ्रेड को हम बाहर निकाल दें तो दैट शुड कॉल्ड मोनोमर. एंड ओवरऑल एक पार्ट शर्ट का एक क्लोथ पार्ट कट करके बाहर निकाल लें, देयर आर मेनी मोर मोनोमर, दैट इज कॉल्ड पॉलीमर. ओके, आई थिंक सो यू शुड ऑल क्लियर व्हाट अबाउट द पॉलीमर एंड व्हाट अबाउट द मोनोमर. नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. एक छोटा वीडियो बनाएंगे क्योंकि चैप्टर बहुत लंबा है, इसलिए चैप्टर को ढेर सारे वीडियो में कनेक्ट करना पड़ेगा और वीडियो अपलोड करते रहेंगे आपको. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो.